Hello guys, my name's Jaswinder and I'm here with one more video. Today's video is about nouns. What are nouns? Nouns क्या होते हैं और इनके कितने प्रकार हैं? How many kinds of nouns are there? आज हम इसकी बात करेंगे। सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, please go now, subscribe and press the bell button so that you do not miss my future videos. Now let's begin. चलो बात करते हैं what is noun. Noun क्या है? Noun is a naming word. Noun किसी भी चीज के नाम को कहा जा सकता है, चाहे वो किसी भी चीज का नाम हो, किसी पर्सन का नाम हो, प्लेस का नाम हो, क्वालिटी हो या उसकी कोई कंडीशन हो या कोई एक्शन हो. For example, I would like to give you definition in English also. Noun is something which exists in this world or can be name of a person, place, quality, state or action. आगे बात करते हैं तो अगर nouns को देखा जाए तो easily remember करने के लिए, आसानी से याद रखने के लिए आप nouns को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. पहली कैटेगरी है visible which you can see, जो आप देख सकते हैं. आपके आसपास बहुत सी ऐसी चीजें आपको मिल जाएंगी जो आप देख सकते हैं. जैसे आप अगर अपने ऑफिस की बात करो, यू कैन सी अ कंप्यूटर, अ कीबोर्ड, अ माउस, अ लैपटॉप, अ प्रिंटर. बट देयर आर आल्सो सम things which we cannot see but we can feel only, right? So things are felt only and we can feel only. So what are they? There is beauty, love, attention, or we can say also there are certain other things like that. So we can say honesty also. Yes, so these are felt only, we cannot see them. I hope you will remember these two things, that what are visible and what are felt only. Now let's move further. Now we are talking about how many kinds of nouns are there. So there are mainly 5 kinds of noun are there. So there is proper noun, common noun, material noun, collective noun, and abstract noun. So I would tell you about these all 5 nouns one by one. So the first one is proper noun. Proper noun means किसी भी जगह के, किसी भी person के नाम को proper noun कहा जाता है. A word which denotes a proper person or place is known as a proper noun. इसके कुछ एग्जाम्पल्स देना चाहूंगा. दिल्ली, ताजमहल, चंडीगढ़, शिमला. सो दीज आर एग्जाम्पल्स. इवन कैन बी माय नेम जसविंदर एंड माय सिटीज नेम सिरसा. दीज आर प्रॉपर नाउन्स. इसके लिए आपको दो चीजें याद रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है. पहली चीज है किसी भी प्रॉपर नाउन का जो फॉर्मेट है उसका स्टार्टिंग अक्षर हमेशा बड़ा रहता है. यू नीड टू राइट अ प्रॉपर नाउन विद द फर्स्ट लेटर कैपिटल. और इसमें इनके साथ ज्यादातर आर्टिकल्स यूज नहीं होते. ए एंड द को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते. पर देयर आर सर्टेन रूल्स एंड एक्सेप्शंस इन इंग्लिश आल्सो. सो at some point yes there may be need but not usually you use articles with that. So I would revise that proper nouns are names of a person or a place which are written with capital letter from the beginning and there are no use of article with them. Now let's talk further. So second is common noun. A word which denotes a class as a whole is called a common noun. To explain, I would tell you that there are certain types of laptops available in the market. There is a laptop from Samsung, right? There is a laptop from HP. There is a laptop from Dell company. But when we keep them together, they are known as laptop or laptops. So this is when we talk about these as a whole, these are called common nouns. For example, in a school there can be 10 teachers, there can be tables, right? At home also we have some chairs, right? So we have rooms. So all these are common nouns which are
known as common as a whole class, right? So there can be mobile phone, or there can be man, women, bird, computer, tiger, book, town, village, city, road, like that. To make it a little bit more clear, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कॉमन नाउन जो है वो एक ही तरह के काफी सारी चीजों को डिनोट करवाता है. फॉर एग्जाम्पल, कंप्यूटर आपके घर पे भी हो सकता है और मेरे घर पे भी हो सकता है. बट इफ आई से किसी कंपनी का कंप्यूटर, तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा. बट जब हम कंप्यूटर वर्ड यूज कर रहे हैं तो दैट इज नॉट अ प्रॉपर नाउन, दैट इज अ कॉमन नाउन. तो यहाँ पे कुछ चीजें याद करने की जरूरत है. तो ये हमेशा जो है छोटे लेटर से स्टार्ट होता है. इन द बिगिनिंग इट स्टार्ट्स ऑलवेज विद अ स्मॉल लेटर एंड आर्टिकल्स आर यूज्ड विद इट. इनके साथ आर्टिकल्स यूज होते हैं. आप ए एंड द को इस्तेमाल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ कंप्यूटर, अ डॉक्टर, एन आर्टिस्ट. सो दीज आर ऑल कॉमन नाउन्स. Now let's begin to the third part, and third is material noun, a word which denotes a material or substance. ऐसा कोई भी word जो किसी material को और किसी substance को denote करवाता है, that is called a material noun. For example, gold, diamond, iron, plastic, leather, copper, steel, sugar. इस तरह का कोई भी word अगर हो तो उसको हम material noun बोलेंगे. सो नेक्स्ट इज, यहां पे कुछ चीजें याद करने की जरूरत है. ए और एन आर यूज्ड बिफोर, आर नॉट यूज्ड बिफोर अ मटेरियल एंड दे आर अनकाउंटेबल. दे आर अनकाउंटेबल, राइट? सो इफ वी आर सेइंग लाइक यस, हम इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, आई वुड लाइक टू टेल यू. सो वी कैन से अ गोल्ड प्लेट, राइट? और वी कैन से अ पीस ऑफ डायमंड, right? An iron plate, right? A piece of plastic, right? Like that we use. Now let's go further. Now we are going to talk about collective nouns. Collective nouns, a word which denotes a group of something, like a flock, a bunch, team, crowd, herd, council, government, mob, union, club, orchestra. So the council has approved plans to build a new park. This is one example. जब हम किसी ग्रुप के बारे में बात करते हैं as a whole, किसी ग्रुप के बारे में, for example, flock. Now flock is a word which denotes a group. Now I would like to compare common nouns और collective nouns में क्या difference है. Common nouns, they tell about different things as a common, right? But now this is telling about a multiple number of things as a whole, right? आपको एक अच्छे तरीके से समझाने के लिए I can say a flock of sheep. sheep का जो flock है, not sheep or sheeps, but when we talk about common noun, we talk about sheep or sheeps, not about flock. Now this is the difference between collective noun and common noun. Now next example is, students are attending a course of lectures. Now course word is here for, I can say, collective noun. Now let's go further, and we are going to talk about abstract nouns. Abstract nouns are words which denote emotion, quality or state which is not visible or cannot be touched but can be felt. So abstract noun क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होते हैं जिनको फील किया जा सकता है पर वो विजिबल नहीं होते और उनको टच करना भी नहीं होता. तो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं: ऑनेस्टी, एंजाइटी, हैट्रेड, लव, एक्सपेक्टेशन, चाइल्डहुड. नाउ आई वुड से ऑनेस्टी ईमानदारी, एंजाइटी किसी तरह का आपको किसी तरह की टेंशन, हैट्रेड, right? Love, affection. So these are words which we cannot see but we feel, right? तो इस तरह के words को हम abstract noun कहते हैं. Now इसके अंदर चीजें जो याद करने की जरूरत है, that is a और an is not used. a और an is not used. इनके साथ a और an को इस्तेमाल नहीं किया जाता. a honesty नहीं होता, an honesty नहीं होता, and these are uncountable.
honesties भी नहीं हो सकता, childhoods भी नहीं हो सकता. So these are uncountable. So now I would like to give you a revision a little bit. There are 5 types of nouns mainly. One is proper noun, other is common noun, then next is material noun, and collective noun and abstract noun. Thank you for watching my video, guys. If you have learned something, please like my video and don't forget to share it with others. And if you have not subscribed to my channel yet, please go and subscribe to my channel and share with your friends. Thank you so much for watching my video.